Good evening, everyone. How are you guys? Good evening. Who's this? Good evening, Sobya. How are you, Sobya? My day was good. How was your day? I hope everybody is doing fine today. Okay, guys. So in the previous class, we were discussing about the polynomials, right? Good evening, Abhyudya. So let's have a continuation of the same. Does anybody remember up to what slide number we were done in the previous class? I'm good, Abhyudya. How are you? That's good to know. Okay, so anybody remembers up to what slide number we were done in the previous class? From tomorrow, your exams are starting. Okay, anybody remembers the slide number? कहाँ तक खत्म किया था? This was done. Graphical, we were doing the graphical solution. I had given you guys a homework, one question. Did you guys do it? कुछ homework दिया था ना मैंने? I remember. This is once again the same thing, the graphical representation only. Yeah. So in the previous class, we did the graphical method of solving the algebraic expressions. Now we have the different method. Basically, the algebraic methods of solving the simultaneous linear equations together. So the most commonly used algebraic methods of solving simultaneous linear equations in two variables are method of elimination by substitution and method of elimination by equating the coefficient and method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमारे पास जो एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं किसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वी हैव द थ्री बेसिक काइंड्स. एक होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके विल एलिमिनेट द टर्म्स. मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट करा के विल एलिमिनेट इट. देन मेथड ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली. सो लेट्स हैव अ लुक इन ऑल थ्री ऑफ देम. सबसे पहला जो है वी हैव द एलिमिनेशन बाय substitution first of all. So see,
Obtain the two equations. Let the equations be a1x plus b1y plus c1 equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. इसने कहा हमें हम कोई भी दो इक्वेशंस ले लेते हैं. अभी इसने हमारे पास इसके कोफिशिएंट के वैल्यू नहीं डाले हैं. They are without the coefficient values here. So these are the two equations. Choose either of the two equations. Let's suppose one and find the value of one variable, say y, in terms of x. Substitute the value of y obtained in the previous step in equation 2 to get the equation in x. देखो करते क्या है बेसिकली इस टाइप के मेथड में हम एक इक्वेशन उठा देते हैं, ठीक है, और किसी एक वेरिएबल का कुछ वैल्यू डाल देंगे हम. लेट्स सपोज x, आई पुट एनी वैल्यू ऑफ x. फ्रॉम दैट वैल्यू आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y. फिर जो मुझे y का वैल्यू मिलेगा वो मैं जाकर दूसरी इक्वेशन में डाल दूंगी एंड आई ऑब्टेन द वैल्यू फॉर दैट. बहुत इजी मेथड है, इट्स प्रीटी इजी. Is this clear till here? Is the method of substitution by elimination clear for everyone? Quickly, response. Don't stay silent in the class. Give me a response. Lipika didn't understand it. See, Lipika, what the elimination by substitution basically means. Elimination by substitution method में हम क्या करते हैं? We put the value for one variable and obtain the value of another variable for first equation. That is done. फिर दोनों x का तो हमने खुद से डाला, तो y का जो value आपको मिलेगा, we put that in the second equation and find the value for second equation also. This you will understand when we will do some questions, but थोड़ा basic should be clear. इतना समझ आया कि एलिमिनेशन मेथड में किया क्या जाता है, एक वेरिएबल का वैल्यू डाल के दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ऑब्टेन किया जाता है, फिर उन्हीं दो वेरिएबल्स का वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व किया जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. हाउ डिड यू ऑब्टेन द वैल्यू? व्हेन आई सॉल्व इट, लेट्स सपोज आई पुट x as 1. यहाँ से कुछ कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, देन आई फर्दर सॉल्व इट, डू व्हाटएवर necessary operations are there, like addition है यहाँ तो addition कर लूँगी, multiplication कर लूँगी, and I somehow will get the value for y. So see, let's move forward now. इसके बाद we have the substitution, the same ही method है. Solve the equation obtained in the previous step to get the value. All the value of each variable is same. No, it depends. Maybe in the question it will be given like put x as this and obtain the value of y, or put y as this, obtain the value as x. अब जहाँ दिया नहीं होगा we will put our own values वहाँ पे. तो solve the equation obtained in the previous step to get the value of x. Substitute the value of x and get the value of y. Solve the equation obtained in the previous step to get the value of x and substitute that value of x in the next equation to get the value of y. देखो इसने example दी है. He has given us x plus twice y is equal to -1, right? This is the equation 1 for us. आगे देखते हैं क्या दिया है. 1 minute, the PDF ended. Just a second. I guess I accidentally pushed it forward. 1 minute, please. This one, right? तो इतना आ गया. अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन इसने क्या दिया है हमें. दूसरा इक्वेशन is 2x minus 3y is equal to 12. 2x minus 3y is equal to 12. This is your equation 1. This is your equation 2 simply. तो आगे चलता है. Let's solve this using the substitution method simply. देखो इसने क्या किया है. How exactly we solve it? देखो अब ये ऐसा इक्वेशन है जहां इसने बोला नहीं हमें x का कुछ वैल्यू या y का कुछ वैल्यू, इसने हमें नहीं दिया है, ठीक है. हमें वैल्यू मोस्टली खुद से ही ढूंढने होते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई क्वेश्चन होगा ना, जैसे पुट x इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 2, या पुट x इज इक्वल टू 1, फाइंड y, ये एक टाइप का क्वेश्चन है. मगर एक आपके पास ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है विद वैल्यूज आर नॉट गिवन. अब मैं खुद से तो नहीं डालूंगी 0 1 2 3. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक लेट्स सपोज इक्वेशन
Yeah, sorry, there was some network issue. So let me repeat it from the starting, from the beginning. I took two equations, ठीक है. अब इसने मुझे x और y का कोई specific value नहीं दिया है. The value like x equal to 1, y equal to 2, this and that. Then nothing is given to me. अब मैं खुद से तो नहीं उठा के कोई value डाल दूंगी question में. Yes, it was some, actually the Wi-Fi, it switched to the other router. I'm really sorry. So let's move on forward. Values are not given. So how would you obtain the value for x or you obtain the value for y as? See, I'll take, let's suppose, equation 1. It's x plus 2y, it's equal to minus 1. I'll shift this twice y term here. X is equal to minus 1 minus 2y. मुझे x का वैल्यू मिल गया यहाँ से. यही वैल्यू उठा के मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन में डालूंगी और वहां से y का वैल्यू ऑब्टेन कर लूंगी. सी हाउ. 2x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? I got x as minus 1 minus twice y. इसी के साथ you guys can see x का जो हमारा वेरिएबल था, वेरिएबल ही टर्मिनेट हो गया, isn't it? I took the first equation, rearranged it a bit, found the value of x, put that in the second equation. x की जगह वापस से y आ गया, आपका x वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो आप आराम से y का वैल्यू ढूंढ सकते हो. फिर वो पुट करके हम x का वैल्यू भी ढूंढेंगे. सी हाउ, बहुत इजी क्वेश्चन है. Multiply this with this, it will be 2 ones are 2, but minus 2. 2 into minus 2 is minus 4y minus 3y, it's equal to 12, right? Minus 2 को वहां की तरफ ले लो, minus 4y minus 3y, it's equal to 12 plus 2. Minus minus is plus 7y, it's equal to 12, 13, 14. So y will be 14 divided by 7, y will be your 2 minus 2. So is this question clear? Y का value obtain हो गया. Put this y का value back into equation, let's suppose 1. This one actually. So x will be equal to 1 minus twice. Y का value क्या है? Minus 2. 1 minus 2 2 is 4, but minus 4, so 4 plus 1 is 5 for us. So did you understand? X का value भी मिल गया. 2 और minus 2. 1 second. कहाँ पर? नेगेटिव बेटा, बिकॉज डिविजन में ले रहे हो ना, साइन वोंट चेंज. So y is negative 2 and your x is 5. So are these types of questions clear for everyone? Should I give you equations? बहुत easy question है. आप चाहो तो y को भी इक्वेट कर सकते थे यहाँ पे. आप x ऐसे 2y is equal to minus 1 minus x रख लेते, तो y आ जाता minus 1 minus x divided by 2. But ये थोड़ा complicated हो जाता fraction, तो that's the reason I equated it as x. Can you do the y? I did the y part also, लपेगा. y का तो वैल्यू ढूंढ लिया ना, -2. फिर वो जाके पहली इक्वेशन में डाल दिया, वहां से x का भी हमने ऑब्टेन कर लिया वैल्यू. y is -2, x is your 5. Try some questions. I'll give you some questions. इसको try कर लो. Try this one and find the values for x and y. Let me show you once, okay? मैं एक और बार दिखाती हूँ. 1 second. See, pay proper attention because इसके बाद you'll have to do it on your own self, by own. So let's suppose this is equation 1, this is equation 2 for you. You have to find the value for x and y, but the values are not given. So first of all, let's rearrange the first equation a bit. x का वैल्यू ढूंढ लेती हूँ वहां से, बट ये प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होता. दिस इज समथिंग दैट आई विल सब्सटीट्यूट. ये सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू होता है, ठीक है. दिस इज नॉट असली वाला x का वैल्यू स्पेसिफाई. दिस इज जस्ट सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू दैट आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग इन माय इक्वेशन 2. तो x मैंने ढूंढ लिया क्या है, जिसको मैं अपनी 2 इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लूंगी. तो 2 एज इट इज, x इज व्हाट? 3 minus 7y plus 3y is equal to your 4. Equating equation 2. 2 into 3 is 6. 2 into minus 7 is minus 14y plus 3y. It's equal to 4. So 6 को ले लो वहां की तरफ, minus 14y plus 3y. It's equal to 4 minus 6, right? Plus minus is minus. 14 में से 3 काट लो,
it will be 11, but negative 11y, it's equal to minus 2. तो y आपका आया -2 divided by -11, minus minus cancels out, y is your 2/11. I hope यहाँ तक there is no difficulty. अब y का तो वैल्यू मिला, बट मुझे x का भी तो डेफिनेट वैल्यू ढूंढना है, तो आई विल फाइंड दैट, क्योंकि x है 3 - 7y के बराबर, y का वैल्यू है मेरे पास, आई पुट दैट हियर, आई गेट द वैल्यू ऑफ x. तो x will be 3 - 7 into 2 / 1 second, what is this? 11. Tell me the value for x quickly. 7 into 2 divided by 11. x का वैल्यू बताओ मुझे quickly. Very easy. सॉल्व करो इसको. पहले तो 7 into 2, 3 - 14/11. यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 हो जाना चाहिए, तब यू कैन सॉल्व इट, राइट? What have you cancelled before the answer? बेटा where have, oh, negative and negative sign. यहाँ पे negative sign. Then make the denominator for 3 as 11. Cross multiply ही कर लो यहाँ पे, like this. 3 into 11 is 33 divided by 11 minus 14/11. So you can take 11 as the common denominator. 33 minus 14, that is equal to 14. It's 19/11, and that is the value for your x. Is this understood for everyone? How exactly I did it? Please give me 1 second. I need to connect the charger. Yes, guys, what's the answer? Lipika got 21/11. Where are other students? Are they sleeping? See, Anuj, you don't have to do anything. You have two equations. Using the substitution method, you have to solve them. 19/11 is the correct answer. Good. Check it once more, Lipika. You don't have to do anything. You have two equations. You have to equate them, do the substitution method and find the answer. तो अब उसके लिए आप क्या करोगे? You need a value for x और value for y, right? चाहिए आपको 33 minus 14, 1 minute. 33 minus 14 is 19. It's 19 लगेगा. Check it once. तो मैंने क्या किया? I equated first equation. मैंने 7y को यहाँ ट्रांसफर किया and I found a value for x that I will substitute in second equation. तो ये value x का मैंने second equation में substitute किया and I simply solved it. वहां से मुझे y का कुछ value निकला, ठीक है? यही y का value उठाकर मैं वापस से let's suppose ये equation 3 बन गई मेरी, जो मैंने equate कर दी first equation. Equation 3 में डाल दिया and वहां से I obtained the value of x simply. Try one more question. Try this one. Try this one and let me know the answer quickly.
Everyone try this, okay? X 24 by 10. Find the y also. Y 3 by 5. Everyone else just confirm the answer. Five by 3. What about others? Ma'am, I did not understand the answer. Which answer? See, you have to do nothing. Take equation 1. Understand ना? Equation 1 ले लो, x को अपनी जगह रखो, y को ट्रांसपोज कर दो, प्लस है -3y हो जाएगा. ये आपकी इक्वेशन 3 बन गई. इक्वेशन 3 का वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो. 3 x का वैल्यू क्या आया? 12 - 3y माइनस y इट्स इक्वल टू 4. अब इसको सॉल्व करो. 3 ब्रैकेट है तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 12 36 minus 3 3 are 9y minus y as it is, it's equal to 4. तो 36 वैसा ही रहेगा. Those who have done the question, check your answer. Minus minus plus 9y plus 1 is 10y, it's equal to 4. Minus 10y अपनी जगह रहेगा. 4 minus हो जाएगा 36, उसको वहां ले लो. Minus 10y it's equal to minus 32. Minus minus cancel हो जाएगा. It will be 32 by 10. 32. Ma'am, I did it by elimination. No, beta, we had to do this by substitution. Elimination by substitution. 32 by 10. 2 5s are 10. 2 1s are 2. 2 6 are 12. So 16 by 5. You did a mistake somewhere, Dhanashri. 16 by 5 आया. अब यही 16 by 5 जो x का वैल्यू आया, सॉरी y का वैल्यू आपका y और x, दिस इज y. y is your 16 by 5. y का वैल्यू हमें मिल गया 16 by 5. मगर x का असली वैल्यू भी तो ढूंढना है. ये तो x का वैल्यू नहीं है ना, कुछ होगा न्यूमेरिक वैल्यू. तो इसी थर्ड इक्वेशन में आई पुट द वैल्यू ऑफ y. तो x will be 12 minus 3. y का क्या वैल्यू आया? 16 into 16 by 5 बेसिकली. तो ये हो जाएगा 12 minus 16 3s are 48 divided by 5.
तो इसके डिनोमिनेटर को भी 5 बना लो एंड मल्टीप्लाई 12 विद समथिंग दैट विल मेक इट द सेम थिंग. तो ढूंढो आंसर एंड टेल मी क्विकली कि क्या आंसर आएगा आपका. अगर कैंसिलेशन पॉसिबल होती हम वो कर लेते, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. सो फाइंड इट क्विकली. It will be 65 minus 48. 17 by 5 आएगा. 12 by 5 or 17 by 5? 12 into 5 is 60 minus 48. That is, yes, 12 by 5. Very good. Simply multiply. 5 12s are 60 minus 48 whole divided by 5. That is 12 by 5. तो बस with this step आपका x का भी value आ गया and you're good to go. Did you guys understand this now? How to solve these questions? Anyone still having any sort of doubt in this? Yes, guys, anyone? I think no. Copy this quickly and I'll give you a question. Why do you only multiply 5 to other? See, why do I basically to make the denominator same. यहाँ पे 5 नहीं है ना बेटा denominator, यहाँ 1 है. LCM ढूंढ लो. ढूंढ लिया 5 और 1 का LCM, that is 5 only. To multiply this 1 with something that will give you 5. 1 into 5 is 5, but numerator कर रहे हो, denominator को भी करना है. So that's the reason you got 60 here. Okay, I'll give one more question. Try this one. इस वाले को ट्राई कर लो and tell me the answer. Lavanya got y as 3, Sobya got y as 5. What about the x? Dhanashri got y as 1. Different answers. What about boys? What are they doing in the class? Anuj, Praneeth, what about you both? Abhyudya, you too. Pretty slow today.
Sabya got x as 6. What about others? Ma'am, mine is 6. Lavanya got as 2 by 3. Dhanashri also got 2 by 3. Anuj got y as 3. Let's check the question now. X will be simply 4 minus twice y, right? 2y को वहाँ ले लो तो सब्सटीट्यूट कर लो इसमें 3 into 4 minus twice y plus 4y it's equal to 6. 4 3s are 12. 3 2s are 6y plus 4y it's equal to 6 simply. तो 12 plus minus minus 6 में से 4 काट लो तो 2y it's equal to 6. Minus 2y will be 6 minus 12. Minus 2y will be minus 6. Minus minus काट लो 2 1s are 2, 2 3s are 6. Your y it's equal to 3. Very good. Whosoever answer 3 is correct. Then we have to substitute this value in this equation and obtain the value for y, x. So 4 minus 2 into 3, that is equal to x. So x will be 4 minus 3 2s are 6. So x is minus 2. Finding x was pretty easy. Why did you guys get the answer in fraction? बेटा 2 into y था ना. 2 3s are 6. 4 में से 6 काट लो तो minus 2. This part इसको थोड़ा देख लो अच्छे से. किया क्या? y का जो वैल्यू मिला वो आपको सिर्फ इक्वेशन 3 में डालना है. इक्वेशन 3 कौन सी इक्वेशन है? जो आपने इक्वेशन 1 को इक्वेट करके x का वैल्यू ढूंढा हो. क्योंकि अगर इसमें डालोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फिर y का वैल्यू भी डालना है तो सिंपली इस x इक्वल टू में डाल दो, इक्वेट कर लो एंड यू गुड टू गो. आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. नाउ ट्राई अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. Solve this one. Equation in 2 variables ही है, बस terms 3 है. Got any value for this? Y is minus 1 by 20.
x 1 by 2. Somebody, Sobya, got it as minus 17 by 13. What about others? Anuj, what about you? Neha, you're not answered a single question. Same for Praneet. Abhyudya. No, Dhanashree answered. Abhisha. Solve this. I want answers from everyone quickly. Ma'am, I'm studying from my exam. Better right now you're having a maths class, right? You can study for your exams after the class. Right now, focus on what I'm teaching because ye miss ho gaya, to who's going to teach you this again? It's your loss. So do pay the attention in the class, then after the class you can prepare for your exams. Anyway, let's solve this. इसका देख लेते हैं. X will be 10 plus twice y, right? Equation 3. Put this in this one. 4 into 10 plus twice y minus 2 into 10 plus twice y plus y, it's equal to 3. 4 tens are 40 plus 8y minus 20 plus 4y plus y, it's equal to 3. Y terms, constant terms को एक जगह कर लो. 40 minus 20 plus 8y plus 4y plus y, that is equal to 3. The 20 plus 8, 9, 10, 11, 12 and 1 is 13y, it's equal to 3. So, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 13y को अपनी जगह रख लो. 3 minus 20 कर लो. 13y is 3 minus 20 is 17. Y will be 17 by, but negative 17 by 13. Whosoever answered this one is absolutely correct. Who was that? Sobya. Sobya? Very good, Sobya. तो यही वैल्यू डाल दो अब अपनी x इक्वेशन में. X will be 10 plus twice. Y is what? Minus 17 by 13. Solve this and tell me the answer for x quickly. It will be 10 minus 34, 13. 130 minus 34 divided by 13. देख लो कितना आ रहा है. 130 minus 34. It will be 96 by 13. (96 by 13 will be the answer. You can't further solve it. Decimal आ जाएगा. So are these type of questions clear for everyone? Anybody having any difficulty in solving them? कुछ नहीं करना है. x को यहाँ ले लो, x को अपनी जगह ले लो, y को वहाँ ले लो, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो, y का वैल्यू ऑब्टेन करो. जो y का वैल्यू आया, वो जो थर्ड इक्वेशन आपको मिली नेक्स्ट वाली, उसमें डाल के x का वैल्यू ढूंढो. This is the question. Hardly takes 3 minutes at most. I'll give you some questions as homework. उनको try कर लेना. Try these two questions today, okay? इनको कर लेना अच्छे से and let me know the answer कि क्या आएगा. You can take a screenshot if you want to.
Yes, Dhanashri. Ma'am, you just gave the homework in the last class also of the plotting points, and Yes. there was you were given the one. Just a minute, ma'am. You give one equation as 3x minus 2y is equals to 6, and we have to just take x as 0, 1, 2, and 3. But if we take x as 0, 1, 2, and 3, it is not coming in linear in a single line. And if we take y as it is not coming in because it is coming in fraction. Answer is coming in fraction. Okay, so it's coming in fraction. Not an issue. That's fine. That can happen because we are not tested. One We one is coming one is coming right. one is coming back. Actually, those points are also not incorrect. वो भी गलत नहीं है. बस इतना इशू है कि they are coming in the fraction. तो ऐसे Yeah. पॉइंट्स खुद से देख लो जो फ्रैक्शन ना आए. ठीक है, लाइक 6, 7, 8, 9 खुद Okay. से देख लो एंड देन जो जो नहीं आते हैं प्लॉट देम. ओके. Okay, ma'am. Okay, so that will be it for today's class. Have a good night. Thank you so much for joining the session.